On to the latest now in the Karnataka obscene videos and sexual assault case. The bail plea of H.D. Revanna, the JDS MLA who is in police custody in connection with the case, will come up for hearing today. The plea in a case related to abduction of a sex video victim was heard yesterday and was adjourned for a day. Meanwhile, last evening, H.D. Revanna was taken to the hospital after he complained of stomach pain. He was treated for gastric issues and was later taken back to the SIT's office. While the father is in police custody, the hunt for the son, Prajwal Revanna, continues. But the trouble for both of them is far from over, with one more FIR now being registered against Prajwal Revanna by the cyber cell of the police. The FIR, in which rape charges have been invoked, is based on a complaint by the victim of a kidnapping case in Mysuru. So there are now a total of 4 FIRs that have been registered. While Prajwal has been accused of rape in 3 FIRs, H.D. Revanna is accused of sexual assault in one of the FIRs and of kidnapping in another. The politics also continues in the case, with the opposition training its guns at the BJP government at the centre, accusing it of allowing the main accused, Prajwal, to flee the country after the obscene videos came to light. BRS MLC K. Kavita, in fact, who is in judicial custody in the Liquorgate case, said that the investigation agencies are leaving people like Prajwal Revanna and arresting people like her. ప్రజ్వల్ రేవన్న లాంటి వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళని దేశం దాటించి అలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం చాలా అన్యాయం. ఈ విషయంలో గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాం. ये आम गुठली के जो इंटरव्यू चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर, और माफी क्यों मांगनी चाहिए मैं आपको बताता हूं. यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं. फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का. प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी. यह स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की. 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको. Amid the raging politics, the Karnataka Congress has filed a complaint against the BJP leader Devaraja Gowda for his recent statements on DK Shivkumar and his claim that he was offered 70 crore to not bring out the issue of Prajwal Revanna. Gowda, remember, has accused Deputy Chief Minister DK Shivkumar of circulating the videos and demanded action against him. However, the Deputy CM called the allegations baseless. कर्नाटका गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी है, इसका नेता है डीके शिवकुमार जी और इसका परिवार. अभी वो स्टील वीडियो को पेनड्राइव बना के सब आदमी को डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, इसका नेता ये हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार जी है. आज तक कोई सेक्स स्कैंडल में मिला है, उन लोग को अरेस्ट किया है आज तक पुलिस वाला, मगर अभी तक कौन डिस्ट्रीब्यूशन किया पेन ड्राइव को, आज तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया. हो ಇಂದು ಸಂಜೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿತು. ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನೇನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಆತನಿಗೂ ಯಾವ ತರದ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರ